Hey guys, welcome back to our course on Flask, and this is our third session, right? So, yeah, guys, I hope you are able to recall in our second class we spoke about these topics. We spoke about dynamic URLs, URL redirections, and building URLs, right? And how do we make these things happen? हमने देखा कि we make use of two functions. फ्लास्क का ही फंक्शन होता है redirect and URL for. ठीक है, तो by using these two functions and the concept of path parameters we can do all of these complex operations, right? because ये हमने देखा. ओके, एंड guys also आपके लिए जो हमारा कोड है फॉर सेशन 2 and the notes are right here. ठीक है, in this folder session 2 में आप देख सकते हो you have your notes and all of the Python modules as well. So I hope no one has any issue in accessing those documents, right? And also guys, I hope आपने feedback भी share किया होगा आपका, and I'm really looking forward to that, right? Right, so guys, with that being said, now we will get started with our third session for the day, and we are going to talk about these concepts. ठीक है, is we will talk about how can we use custom HTML templates for our web pages. Then we'll talk about Jinja. अब हमने ये टर्म हमारे फर्स्ट क्लास में देखा था what Jinja is, and we'll talk about it at length in this class, and we'll also discuss this amazing concept of template inheritance. ठीक है, right? तो गाइस मैं बस एक बात आपको बता दूं, आज की क्लास में इट्स गोइंग टू बी रियली कोड हैवी. ठीक है, तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स, लॉट ऑफ कोडिंग स्किल्स एज वेल. ओके, राइट. तो यार गाइस, विद दैट बीइंग सेड, थ्योरी तो है नहीं कुछ ज़्यादा. सो लेट्स ओपन अप आवर प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी. सेशन 3 में जा रहे हैं. ऑल राइट, जल्दी से विल ग्रैब दिस लोकेशन. we'll open up our anaconda prompt. ओके, इसको जूम करके डालते हैं. could not recognize inheritance. okay, let's try this. okay, आ गए. now guys, we are doing conda activate our environment. environment active हो गया. now we will open up our VS Code instance. ठीक है, ओके. तो गाइस हमारा VS Code ओपन हो गया. अब इसको जल्दी से क्लोज कर देते हैं एंड यस, वी आर हियर. yes, now let's open up a new file. let's call it app.py as always. ठीक है, and what code are we going to write? Guys, exactly the same as we've seen in our first class. हमने फर्स्ट क्लास में क्या लिखा था? we had these endpoints home and about, right? तो उसी को हम कॉपी करने वाले हैं. let's quickly copy that, पेस्ट कर दिया एंड नीचे जा रहे हैं. टू स्टार्ट द एप्लीकेशन वी यूज दिस ब्लॉक ऑफ कोड, राइट? तो यहाँ पे आते हैं. ठीक है, राइट. प्लीज नाउ जस्ट हैव अ लुक. यहाँ पे अब बस एक बार ज़रा देखना. होम पेज के लिए वी हैव दीज एंड पॉइंट्स एंड लुक एट द मैसेज, राइट? वेलकम टू होम पेज. अबाउट पेज के लिए वेलकम टू द अबाउट पेज. ऑल राइट. See, now what if we want to add more HTML code on our web page? Right now what does this look like? I mean, we know what it looks like. फिर भी let's just open up our terminal, clear करके let's do python app.py. ठीक है, ये करके we'll open our web page. as ये देखना, it just looks straightforward, right? welcome to home page and the other endpoint we had was welcome to the about page. Guys, अब what if we want to add more info on our web page, right? obvious ही बात है, real world के website में we'll add a lot more data, lot more info, right? इतना ही तो बस नहीं दिखाने वाले हम, right? तो I mean, of course, one way to do that, we can use of these triple quotes, right? हम क्या बोल सकते हैं? return
हमने आई मीन गाइस, फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, पाइथन में बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस ट्रिपल कोट्स वी कैन राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे वी कैन राइट अ कॉम्प्लेक्स HTML कोड जो भी हमें ऐड करना हो। ये सोच के देखना, इफ दिस इज द पैटर्न दैट वी विल फॉलो, हाउ क्लटर्ड और अनऑर्डर्ड दिस पेज माइट लुक। बिकॉज ये पेज का नाम क्या है, app.py, मतलब we should understand this module should just have the code to create the endpoints and to run the application, ठीक है। बट अब हर एक endpoint के लिए if we keep writing that complex code right over here, firstly our script will be really long and it will be really unordered, right? It won't feel good, it won't look good, it won't be readable also, ठीक है। Yes, that's why we make use of the concept of modular programming, right? हर एक dedicated task के लिए we will create a new file module, right? Yes, यहाँ पे भी we are going to do exactly that. So rather than from now on, rather than displaying like info like this, we will create a HTML file for each endpoint and we will invoke those HTML files ताकि when the user comes to these endpoints in our function we will directly invoke those HTML files, ठीक है। How do we make that work? Let's see that now. So let's get rid of this and इसको हम uncomment करते हैं। Guys, first things first, आपको क्या करना पड़ेगा, you will create a folder to store all your custom HTML templates, your HTML files, ठीक है। तो आप इसको नाम तो कुछ भी दे सकते हो, but the what do you call, the convention is to call it something like this, templates, the convention, ठीक है। हम भी वही फॉलो करेंगे, एंटर गाइस। एंड फ्लास्क का भी देखना, when we come here, right, फ्लास्क का जो कंस्ट्रक्टर होता है, let's give a comma and see, you will find one parameter called, ये देखना, template folder, right? तो फ्लास्क खुद हमसे पूछ रहा है कि आपके जो टेम्पलेट्स होंगे वो फोल्डर का नाम क्या है, एंड ये देखना the default value is templates, ठीक है। So that's why I meant to say, if you want to store your custom HTML files, create a new folder and call it templates because it is the convention. And even in Flask, the default value for this folder name is also given as templates, ठीक है। तो with that being said, we are good. अब हम क्या करने वाले हैं, we will return this, I mean we will remove that and we will remove that, okay, for now. अब templates के folder के अंदर we will create our first HTML file called as home.html, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, देखो, I will just do this guys। अब ये क्या है, this is just boilerplate code and how did I bring this up guys? The best part about VS Code is, right, जो भी HTML का जो boilerplate होता है ना, मतलब the standard code, I just typed HTML, I clicked on this, ये आ गया standard boilerplate code for a HTML page, ठीक है guys। I hope you are able to recall in the very first class हमने ये देखा था, right? We saw that every HTML page starts with these tags, HTML, and then we have the head tag and the body tag, correct? I hope you are able to recall from our first class, ठीक है guys। What does head tag do? We discussed that head tag contains meta information about the page. अब ये देखना, ये क्या है, ये बस encoding का बोल रहा है, we are going to use UTF-8 का encoding, and ये क्या बोल रहा है, the width of the page, मतलब डिवाइस जितना भी होगा width में, हमारे पेज को भी उतने width को स्केल कर देना, right? एंड ये टाइटल क्या है, the name of our web page, मतलब when we go to our web page, right? अब ये देखना यहाँ पे क्या नाम दिखा रहा है, this ugly URL, right? बट यहाँ पे नाम क्या देना है, that is this title, ठीक है। हम क्या देंगे यहाँ पे, home देंगे, right?
Okay. And body is, what does the body tag do? We discussed that body tag will contain the contents of the page. मतलब इस पेज में अब क्या दिखाना है, that will come over here inside the body tag. ठीक है. For now हम अब तक क्या दिखाते आ रहे हैं? H1 and welcome to the home page. राइट. सिंपल सा कोड है गाइस. ठीक है. सेव कर रहे हैं. एट द सेम टाइम लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल about.html. now this is the html page corresponding to our about page. ठीक है. कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम थिंग. अब चेंज क्या होगा गाइस? होम एंड ये वाला वैल्यू अबाउट. ठीक है. कर दिया हमने. क्लोज करते हैं. प्लीज देखना होम एंड अबाउट का HTML पेज, HTML फाइल्स हमारे रेडी हो गए. ओके. नाउ द ओनली क्वेश्चन इज हाउ कैन बी when our users come to this endpoint, how can we invoke or call these HTML files now? वो कैसे करें? guys, वो करने के लिए we will make use of Flask का एक function that is called render template. नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑलमोस्ट. render template मतलब invoke और show that template. ठीक है. क्या कर रहे हैं? return render template. which template? open home.html. that's it. ठीक है. render template which one? home.template. सेम वे यहाँ पे भी करेंगे. about render about.html. save. ठीक है guys, straightforward. We're calling this function to load up our HTML templates. ठीक है. now let's start this application. let's open up our terminal. I think we already have one here, right? अच्छा, हमने एक और खोल दिया. okay, anyways let's remove that and we have a server running, is it? oh yes we do. ठीक है. ये देखना गाइस, वेलकम टू अबाउट पेज. ठीक है. एंड यहाँ पे नाम देखना, द नेम बिकेम अबाउट. ये नाम कहाँ से आया? फ्रॉम द टाइटल टैग विद इन द हेड टैग. ये जो है ना, दैट इज व्हाट केम अप ओवर देयर. नाउ लेट्स गो ट्राई आवर होम एंड पॉइंट. सेम थिंग गाइस, वेलकम टू द होम पेज एंड आवर नेम इज ऑल्सो ओवर हियर. ठीक है guys, अब imagine how many ever endpoints you create, right? यहाँ पे you can go on creating those custom HTML templates in the very same way and you can invoke them by using this line of code. Simple and straightforward. ठीक है guys, I hope this made sense. How can we invoke our custom HTML templates or HTML files for our endpoints? Okay. As by now I think we are all confident that we are clear on this custom templates. ठीक है. right guys, now for the remainder of this class and this course we will heavily make use of these two concepts, Jinja and template inheritance. Guys, now what is Jinja? We briefly spoke about this term in our first class. यहाँ पे देखना. What is Jinja? We discussed that it is a web template engine. मतलब it is simply a tool that allows us to develop dynamic web pages. तो मतलब based on the user's input or based on the changes in some backend, even the content of our web page will change according to that dynamically. ठीक है. तो अगर वो करना है we will make use of Jinja. And we also introduced this term template inheritance, right? So now let's talk about how these things will work right now. तो अब Jinja में आ रहे हैं.
ठीक है guys. Now Jinja, there are these four major concepts that we will talk about today, ठीक है. एंड जिंजा का यूज भी बस ऑलमोस्ट यही है, दीज फोर मेजर कॉन्सेप्ट्स, राइट. दिस इज व्हाट जिंजा, मतलब ये करने से यू विल सी हाउ पावरफुली वी कैन क्रिएट आर डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस पैरामीटर्स एंड प्लेस होल्डर्स, राइट. Guys, now to talk about that, let's come here. We have our home HTML and about HTML, ठीक है. Guys, home पे देखना, title home, even in this h1 heading we have this term home. and about में आते हैं, यहाँ पे भी about है, यहाँ पे भी about है. तो ये पैटर्न से हमें क्या मतलब what are we able to understand from this is that depending on the page that you go, this will be the name of the page and this will be in your heading, no matter what. So we are understanding that हमारे वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर है, जिस भी पेज पे हम जाएंगे this value and this value are the same for the name and the heading of the page. तो इस मान लो ऐसे ही if we had 10 or 20 or 100 more pages, will we keep on writing this name twice repeatedly? अगर मान लो हेडिंग के ऊपर हमारा एक सब हेडिंग भी है, that welcome to home page, this is the home page example, if we have an additional sub heading also, तो rather than manually typing out that particular word everywhere in every file, क्यों ना हमें प्लेस होल्डर रख दे यहाँ पे. Wherever we are feeling that this particular value is gonna repeat, let's keep a placeholder. तो in every page, in every place, एक बस placeholder रख देंगे. And in our main application, we will pass the value home करके. तो wherever we pass the value ना, हर एक placeholder में वो आ जाना चाहिए. That is what a placeholder is. But using HTML and Flask, how can we do that? Right? I guess guys आपको clear हो रहा है. Rather than manually typing home multiple times and about everywhere, I will write a placeholder, a common placeholder in every file. And हम ये value home and about जो है ना, एक बार pass करेंगे and it should automatically come over here. Guys, so basically डायनामिकली इनपुट के बेसिस पे हमारा कंटेंट ऑफ द पेज चेंज होना चाहिए. तो हाउ विल वी डू दिस? बाय यूजिंग जिंजा, राइट. गाइस, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट प्लेस होल्डर. नाउ क्या करेंगे हम? ओके, रिमूव दिस, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किए, एक और सेट हमने ओपन किया, तो ओपन 2 sets of these curly brackets, ठीक है. and you will place your placeholder over here. यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है. guys, now this is a placeholder. okay, now app.py, ठीक है. guys, now where can I pass that value home? Where can I pass the value? Let's think about things, right? We are invoking home.html. वो यहाँ पे वो काम कहाँ पे हो रहा है? Here, right? So obviously somewhere over here we can pass the value, right? So what we will do, comma title equal to home. हमने क्या किया guys? We are passing this parameter with this argument home, ठीक है. Now how to capture that parameter title? That's it. बस इतना करना होता है, right? Title, यहाँ पे title, and हो गया guys. This is our very first placeholder that we have written using Jinja. Now what will happen is, when our end user comes to this endpoint, Flask will show up this HTML file
and it will pass this parameter title with the value home. तो बैकएंड में क्या होगा, ये जो टाइटल का वैल्यू है ना, जहां पे भी ये प्लेस होल्डर है ऐसे, that value will be inserted over there, right? So let's try this out. For we'll give some different value. So let's say home page, just to make it clear that it's working, right? जा रहे हैं वेब पेज पे, रन कर रहे हैं, ऐसे ये देखना, वेलकम टू होम पेज, टाइटल भी देखना होम पेज, नाम बदल गया. So what exactly happened here is this parameter got passed to this HTML file and it was captured in this placeholder title. So basically guys, Jinja में the way you write your placeholders is in this form. You will open two sets of curly brackets, you will pass the name of your variable जो भी आपका है, and you will close those brackets. This is the format of writing placeholders in Jinja. ठीक है? I hope it's making sense. Now the exact same thing we can place in our about page also. यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? How can we make it work? The same way. Title equal to about page. बस देते हैं. Let's see if it's still working. तो home के जगह we will write about. ये देखना guys, about page title भी reflect हो गया, ठीक है? This is how we make use of Jinja के placeholders and parameters. I hope ये सबको clear हो गया. Okay, right. Yes, for now let's just bring it back to the original value. Now that we know it works, let's just bring it back. ठीक है? बस ये देखना, देखने में भी कितना सही लग रहा है, right? We just have title, we just have placeholders, and बस एक बार ये value pass करने से behind the scenes it's all happening here, and dynamically our web page का output is being changed. ठीक है? Right. Okay, so guys, we spoke about the placeholders. Now let's talk about one more thing. Now just compare home.html and about.html. Is what is different between these two files? I'll take you to home HTML. बस 5 सेकंड ऑब्जर्व करना इसको, right? And let's see about. Guys, कुछ भी अलग दिख रहा है क्या? Everything is the same, right? तो why are we having two different files that are basically showing the same thing? मतलब इतना लंबा कोड हम लिख रहे हैं in both the files to show the same thing. तो अगर सेम ही कोड लिखना था, why can't we write it in one file and somehow access that common code in these files? Can we somehow do that? Because guys, see, here we are just repeating our code, right? And in programming we have this concept, correct? Dry, D-R-Y, don't repeat yourself, correct? But we are repeating ourselves over here. So guys, to avoid that, we have this concept now, template inheritance. ठीक है? How does this work? हम क्या करेंगे? Templates में we'll make a file called layout.html. Layout मतलब the common blueprint हर एक पेज का, ठीक है? And we will just copy all this code, copy, and ये क्या हो गया? Okay, and we will paste over here. इसको यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है? ऐसे ये देखना, this is our layout. Okay, now let's empty our home page and about page also. Empty करते हैं. तो what does this mean is that हर एक पेज का हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होने वाला है. Title based on the given name, title, and this heading statement. How can we incorporate that code
inside our home.html file, right? The way we do that is curly brackets, percentage, extends which file? Layout.html percentage. That's it. Save. And the exact same thing will come here also. Okay? Okay, so what does this statement mean? Extends layout.html. Guys, पहले तो curly brackets means Jinja code. ठीक है? Using Jinja, and we are basically saying that this home.html inherits from layout.html. That's what we are saying. तो layout में जो भी कोड है, we want to inherit all that code over here, and that's it. Because home.html का उसका अपना कोड तो at this moment कुछ है नहीं. ठीक है, इतना लिखे हम. Now let's save everything and try the code again to run it again. रन कर रहे हैं अबाउट पेज, ये देखना guys, it is working beautifully, right? अबाउट पेज, होम पेज, टाइटल भी आ रहा है, हेडिंग भी आ रहा है, without writing a single line of code in home.html. Why? Because this file is inheriting everything from this base file, this layout wala file. ठीक है? This is what is meaning of template inheritance. I hope this was clear. ठीक है? Because ये देखना, so what exactly happened when we came to the home endpoint? We called this home.html with this parameter home. ठीक है? अब हमने क्या बोला? We told that home.html is actually inheriting from layout.html. तो बेसिकली जो भी पैरामीटर्स भी आए थे, all of those will be propagated to this file, because inherit कर रहा है ना, so it will just propagate all the parameters. ठीक है guys, this is about inheritance. I hope this made sense. So I hope at this point ये हमने understand कर लिया how inheritance works, and inside Jinja we are clear with how to pass parameters and placeholders, right? Placeholders ऐसे होते हैं open brackets, and parameters basically render template में whatever you keep passing over here, this value will be accessible as a parameter in the backend. ठीक है? Right. But I hope that made sense. Is now let's talk about if conditionals. और actually rather than that, उसके पहले let's talk about, अब ये देखना guys, layout है. Now what if I want to show some content on the home page only specific to home page? It's not a common code. अगर common नहीं है तो layout में नहीं लिख सकते. Now I want to write code specific only to the home page. वो कैसे करेंगे? Can we write the code directly over here on words? मतलब मान लो h1 लगा के directly लिख सकते हैं. Guys, rather than ऐसे करने से, what we will do is layout में आएंगे. This is the common structure, right? Now what we will do is we will do curly brackets, percentage sign. We will say block, एक नाम देंगे, content या कुछ भी नाम दे दो, percentage sign. Okay. Now we have guys, basically हमने ये block को हमने open किया है, तो उसको close भी करना पड़ेगा. So we will say end block. तो ये क्या बोल रहा है? लेआउट फाइल में क्या हो रहा है? दिस इज आवर कॉमन स्ट्रक्चर. कॉमन स्ट्रक्चर के बाद if any page wants to have their own dedicated content, they can include that within here. ठीक है? All right.
नाउ होम पेज में क्या करेंगे हम, द सेम थिंग, ब्लॉक, ब्लॉक का नाम क्या था, कंटेंट। बस ये जो कंटेंट है दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, block is a fixed name. This is just the name of that one particular block. I can also have one more block saying block content 2. We can have any number of blocks. This name is just one alias or identifier for this particular block. ठीक है? Now block content percentage, अगर हमने block open किया है तो close भी करना पड़ेगा. The way we do that is end block. Guys, यहाँ पे we can say end block, but if we want to be more explicit कि हम बोल रहे हैं हमने content का block open किया, content का block close कर रहे हैं, तो you can say end block content. ठीक है, राइट। अब guys इस block के अंदर whatever code we write that will directly come inside over here, इस block के अंदर वो आ जाएगा वो, and finally this will be our total web page. Understanding? अगर clear नहीं हुआ we'll talk about it. इस अब हम क्या बोल रहे हैं, in the home page I want to show my contents. ठीक है, तो what can we say, let's do h3, let's say contents. okay, अब इसके अंदर I want to show a list, a list of all the possible pages, मतलब कहाँ पे आप जा सकते हो करके, ठीक है, contents, right? तो अब guys अब हम list कैसे बना सकते हैं HTML में, now we will create a list of bullet points, right? तो we will write this UL tag, unordered list, UL मतलब unordered list, ठीक है। अब unordered list means there is no order like 1 2 3 4, it is just bullet points, ठीक है। Now list हमने create कर दिया, how to populate the values of the list, li, इस li मतलब the value of that list, मतलब एक like one value in that list, ठीक है। so we will say home, right? and let's just keep repeating, 4 values देते हैं, home हो गया, about, then let's say employees and let's say careers, ठीक है। and बस एक और डाल देते हैं, let's say contact या contact us, ठीक है, सेव कर रहे हैं। is basically okay, now we'll just run the code and we'll see exactly what happened. होम पेज है, रन कर रहे हैं, ये देखना लिस्ट आ गया। now let's just try to run the about page also, we have only this. guys I hope अब आपको थोड़ा आइडिया मिला कि एग्जैक्टली हुआ क्या करके, राइट? सो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं and let's open the home page over here, ठीक है, and we'll compare them side by side. ये देखना होम पेज में we are inheriting from the layout, okay, about में भी we are inheriting from the layout, okay, and layout में ये हमारा boilerplate मतलब ये common code हो गया। then we have this block field और दिस ब्लॉक का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये ब्लॉक अगर हमें इस कॉमन लाइन, इस कॉमन कोड के बाद किसी पेज में इफ यू वांट टू एंटर सम स्पेसिफिक कंटेंट, वी विल इंक्लूड दैट इनसाइड दिस ब्लॉक, ठीक है। दैट इज व्हाई इन आवर होम HTML वी आर कॉलिंग आउट दैट ब्लॉक, ठीक है। तो इनसाइड दिस ब्लॉक कॉल्ड कंटेंट आई वांट टू शो दिस डेटा for my home HTML, that's it. About page में we have not yet called that block, so about page will not have any of its own data, ठीक है। So guys this is how inheritance works together with Jinja. I hope मतलब जिस आप देख के बोलना how neat this looks, right? We don't have any of the repetitive HTML code, all of that stuff is over here in one place, ठीक है।
तो इन फाइल्स में हम क्या लिख रहे हैं? ओनली दैट स्टफ विच इज डेडिकेटेड टू दिस पेज, नथिंग एल्स। ठीक है, जो भी होम में होगा सिर्फ वही वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, दैट्स इट। एंड जो अबाउट में होना चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स डू इट अगेन। अबाउट पेज में क्या हम लिखेंगे? परसेंटेज ब्लॉक will access content and we'll do this, and the same way इसको क्लोज भी करना होता है एंड ब्लॉक। एंड विच ब्लॉक? कंटेंट। ठीक है, राइट। अब इस पेज में हम क्या दिखाने वाले हैं? लेट्स राइट डिव टैग गाइस। जैसे डिव क्या होता है ना, डिव यू कैन थिंक ऑफ इट एज जस्ट वन कंटेनर। मतलब डिव के अंदर जो भी आप HTML का कोड लिखोगे, all of that is part of one container. Okay, so inside this I will write one paragraph called this is the about page of, let's say, ABC company, ABC, and let's also say that we are a pioneer in the field of AI and machine learning. ठीक है, इतना कर रहे हैं गाइस। अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग नाउ? होम पेज में सिर्फ ये होना चाहिए, अबाउट पेज में सिर्फ इतना होना चाहिए। लेट्स ट्राई इट आउट। होम पेज, ओके, अबाउट पेज, ये देखना गाइस, आर div with the 2 paragraphs is over here. ठीक है, so we have just included the code specific to about HTML inside this block. That's it guys. I hope at this point आपको block का meaning, उसका use clear हुआ कि how do we use it and how it works, right? Now let's open this up. home page में आते हैं, right click, view page source में जाते हैं। अब ये देखना, what did we have in our home.html? We had one line of inheritance and one block of specific code. आप यहाँ पे देखना क्या दिख रहा है आपको? The complete HTML code, right? We are having the boilerplate code as well as the specific code. मतलब जो भी हमने यहाँ पे लिखा, all of that code got propagated inside this block content and it got rendered as one complete HTML file. Guys, this is the dynamic code I'm talking about, right? Dynamically we are able to generate all of these HTML pages. ठीक है, about page का देखते हैं, view page source, ये देखना गाइस, इट हैज़ द सेम इनिशियल स्टफ एंड उसका खुद का कोड। डिव के अंदर 2 पैराग्राफ्स, यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट home.html, this block got replaced with this code. Same way in the about section, that block thing got replaced with this code. Okay, so guys, this was all about the block का code. I hope till here it made sense. ठीक है, right? Now guys, we'll see one more cool thing. This is बस एक HTML के लिए, since we're doing a lot of HTML, let's just do it. अब home.html है, right? About HTML, ठीक है. Now we have this contents. Why don't we make this about page a clickable? अगर यूजर आए, if they click on this about, they will get the about page rather than manually typing it out. वो हम कैसे करेंगे guys? Just simple HTML. In this place li उस वैल्यू के अंदर हम एंकर टैग यूज करेंगे, ठीक है? ए टैग, मतलब guys देखो, अब what is the requirement? When the user clicks here, we want to redirect them to the about page. Inside the home page, when they click here, we want to redirect them to the about page.
तो HTML में फॉर रीडायरेक्शन एंड ऑल वी यूज दिस एंकर टैग, ए वाला टैग, ठीक है। अभी देखना href मतलब ये पूछ रहा है कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है आपको, व्हाट इज द URL, राइट। बिकॉज व्हाट इज आवर URL, अबाउट पेज, आर वी गोइंग टू कॉपी दैट होल URL फ्रॉम हियर, यहाँ पे जो भी होता है आर वी गोना कॉपी दिस, नो वी विल नॉट डू दैट। तो what have we learned, how to include the URLs? Guys, I hope you are able to recall. Flask का एक function होता है URL for, right? So let's go ahead and import that URL for. Import हो गया? Okay. Now, what are we saying? HTML is asking us, where do you want me to redirect you? We are saying, redirect us to where. Now guys, यहाँ पे क्या हम डालते हैं, the name of that function, right? So what is that function corresponding to this endpoint? This वाला thing, right? ये value हम डालेंगे, ठीक है, and we'll remove about from there and anchor tag के बीच में डालेंगे. Now let's see what happens. Let's go to our home page. वे देखना guys, about के अंदर एक line आ गया है, meaning it is now a link. Click, see guys, यहाँ पे we have that the cursor, यहाँ पे we have this hyperlink. We came to our about page, ठीक है, back में आते हैं. Now when we click on a thing, if we want HTML to open that link in a new tab, क्या करेंगे, space inside the anchor tag ये value हम देंगे, target equal to double quotes underscore blank, that's it, ठीक है. सेव कर रहे हैं, बस इतना करने से now we'll click on about. Did we not save it क्या, target href target equal to blank should have worked. Let's refresh this. Now let's do it. ये देखना का इस न्यू टैब में ओपन हो गया. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टफ. एट दिस पॉइंट हमने क्या सीखा, वी हैव लर्नड इनहेरिटेंस एंड वी हैव लर्नड अबाउट ब्लॉक्स, ठीक है, हाउ टू इनहेरिट कोड फ्रॉम अ कॉमन फाइल and how to write a dedicated code of a page inside these blocks. And we also learned some new HTML tricks about redirection and new tab में open करने का, ठीक है, right. Guys, now Jinja में we can also do these things, if and for, ठीक है. So let's try it out. अब if का कोड हम कैसे लिख सकते हैं. Now let's say we have a common अब लेट्स मेक एन एंड पॉइंट जहाँ पे यूज़र एक वैल्यू देंगे URL में, उस वैल्यू को हम लेंगे, इन द बैक एंड विल प्रोसेस दैट वैल्यू. इज इट एन इवन नंबर और मतलब पॉजिटिव नंबर है, ऑड नंबर है, या क्या है करके, ठीक है. ओके, एक्चुअली लेट्स जस्ट डू दैट ना, विल चेक अबाउट इफ इट्स इवन और ऑड और ज़ीरो. तो लेट्स क्रिएट अ न्यू एंड पॉइंट. लेट्स कॉल इट app dot route. Let's just call it check number, ठीक है, check number, or let's call it evaluate. We are trying to evaluate ना, evaluate what are we taking in, a number, right, integer number, num, ठीक है, हो गया. Now def evaluate, we are taking in number. Okay, now what are we going to do here, पास करते हैं. तो ऑफ कोर्स इस पेज के लिए भी वी नीड एन HTML फाइल. तो विल कम टू टेम्पलेट्स, evaluate.html, ठीक है. गाइस, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू, वी विल इनहेरिट फ्रॉम द बेस फाइल, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे ऑल्सो नाउ वी विल रिटर्न रेंडर टेम्पलेट. रेंडर टेम्पलेट में हमारा नाम क्या है अभी, evaluate.html, right. And of course we have to pass this parameter also called
इवैल्यूएट, ठीक है, सेव करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू कम टू आवर इवैल्यूएट एंड पॉइंट. ठीक है, so it could not find it because it is expecting a parameter also, right? Let's give a number 5. देखो guys, because we inherited it, ये heading आ गया, नाम भी आ गया. Okay, now let's do the calculation. अब back end में how can we tell that ये एक number है, इसको हमें process करना है, right? I hope at this point आपको पता होगा. We will say number equal to num. तो बैक एंड में वी आर पासिंग दिस पैरामीटर, इसका वैल्यू होगा ये वाला वैल्यू. ठीक है, सिंपल. तो बेसिकली रेंडर टेम्पलेट में वी कैन कीप ऑन पासिंग वॉट एवर पैरामीटर्स वी नीड, राइट. अब यहाँ पे आ रहे हैं, इस अगेन वी विल कॉपी दिस ब्लॉक, बिकॉज इन इवैल्यूएट वही तो कर रहे हैं ना हम. वी विल से एंड ब्लॉक कंटेंट. This is going to be the content of this evaluate का file. अब now let's say that h2 देते हैं. Let's say that given input is, what is our value guys? Placeholder, right? It was called number, correct? Yes. Let's just see if we are good so far. Evaluate 5. ये देखना, गिवन इनपुट इज 5, ठीक है, बिकॉज वी कैप्चर्ड दिस पैरामीटर नंबर इन दिस प्लेस होल्डर. ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज इफ एल्स कंडीशनल्स. यूजिंग जिंजा हाउ कैन वी यूज इफ एल्स कंडीशंस? ये देखना. नाउ अगेन एनीथिंग रिलेटेड जिंजा गाइस कर्ली ब्रैकेट्स में ही होता है. ठीक है, इफ लेट्स डू दिस एंड कॉपी कर रहे हैं. अगर कुछ ओपन किया है तो उसको क्लोज भी करना होता है. विल ओपन एन इफ ब्लॉक लाइक दिस एंड विल क्लोज इट लाइक दिस इन एंड इफ. अब इफ व्हाट, वी विल सिंपली राइट आवर कंडीशन नाउ. तो इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, if number modulus 2 equal to 0, let's say paragraph में let's just say that number है ना, number the given number, the given input this is even. ठीक है, how will we write else if guys? Now we have to write else if ना. वो क्या करेंगे हम, कॉपी किया इसको, let's bring it here. Else if number modulus 2, okay, actually guys this is not the right way. We have to check if the number is 0 or not, right? So if number equal to 0, the given input number is neither even nor odd. वो होता है because 0 is not even nor odd, right? 0. Else if number modulus 2 equal to 0, we will say this paragraph, the given input is even, right? तो बस उतना लिखते हैं यहाँ पे, right? अब else कैसे लिखेंगे? This very same way. Else just copy this, इसको अंडर लाते हैं, given is odd. ठीक है, ऐसे हमने क्या किया बेसिकली. Let's give some space अगर क्लियर नहीं है तो. ओके गाइस, नाउ विद रिस्पेक्ट टू द इवैल्यूएट पेज हम ये ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, जो लेआउट में ये जो ब्लॉक है ना, नाउ वी आर राइटिंग कोड स्पेसिफिक टू दिस ये वाला फाइल इवैल्यूएट. अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं,
Firstly, we are showing this, the given input is जो भी number है. Now we are running this if conditions. Whenever we open an if, we always have to close it. ठीक है? And ये देखना, if आप कैसे करोगे? Percentage always if number equal to 0. Guys, what does this look like? क्या ये syntax आपने कहीं पे देखा है? ऐसे. Where do you compare values like this? This is Python code, right? तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप जिंजा के अंदर पाइथन कोड लिख रहे हो, राइट? Guys, Jinja supports Python, right? If number equal to 0, elif number modulus 2. So it does not have its own syntax or way of writing code. We are simply writing Python code itself over here, right? इस कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? सेव कर रहे हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. इवैल्यूएट 5, देखना द गिवन इनपुट 5 इज ऑड, आ गया. आप देखते हैं 0, द इनपुट इज नीदर 0 नीदर इवन नॉर ऑड. 20, इट इज इवन, राइट? तो सी हाउ अमेजिंगली इट इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, राइट? मतलब हमने यूजर से इनपुट लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे वो वैल्यू पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बैक एंड में वी आर प्रोसेसिंग दैट वेरिएबल, दैट वैल्यू, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट वी आर डायनामिकली ऑल्टरिंग आवर HTML कोड, राइट? व्हाट डू आई मीन? अगर मैंने एक इवन नंबर दिया गाइस, तो इसका कोड देखना, देखो पैराग्राफ टैग है, गिवन इनपुट इज 20, दिस इज द HTML कोड. इफ आई गिवन इवन नंबर, now what if we give an odd number, right? 19. इसका देखते हैं, ये देखना everything is same, the given input is 19, the given input is odd. ये देखना input is 20, input is even. Guys, the same HTML file is being generated dynamically, right? Structure same है, code हमने एक ही बार लिखा था, but based on the user's input, because we're using Jinja, we are dynamically generating our HTML code based on the given input, right? Guys, this is how powerful Jinja is, and this is what I meant when we said Jinja helps us to dynamically develop HTML code. ठीक है? Guys, ये example हमने लिया था just to show how if else works within Jinja. So I hope this made sense. ठीक है? This is that if else block. Okay. Now I'm assuming we are good and we are clear. This is now what we'll talk about. तो if else हमने देख लिया. अब हम बात करेंगे loops का. Guys, turns out Jinja में we can also use for loops. Okay? Guys, now we are going to see an amazing example, right? Now we'll put a lot of concepts together, ठीक है? Yes, for now, अभी मान लो we have a database, we have an employees का database, ठीक है? तो अब मान लो we don't have an actual database, but we'll assume that file not inside templates, inside session, right? तो यहाँ पे क्लिक करते हैं and एक new file बनाते हैं. Let's just call it, ये कहाँ पे आ रहा है? Is it in the same? Okay, it's there only, right? Okay. So rename, we'll call it employees.py. Now let's assume that this module contains our employees का data. ठीक है? तो what do we have here? Employees का data. That's it. Now this is going to be a dictionary, मान लो. Dictionary. So this is our dummy database. ठीक है? For the purpose of this example. Now हमारा structure क्या होगा database का? Dictionary है. Dictionary has key value pairs, right? तो key होगा employee का ID, value होगा dictionary with the info of that employee. Okay, तो employee ID, इनका value है dictionary. So we have name. Let's say we have Michael, ठीक है? फिर we have position, or we'll give age over here. Age
is let's say 42, and let's say position, okay, let's say Michael is a manager. ठीक है. सो गाइस हमारा स्ट्रक्चर देखना, एक डिक्शनरी है एम्प्लॉइज का, उसमें वी हैव आवर डेटा लाइक दिस, एम्प्लॉय आईडी एंड द इन्फो ऑफ दैट एम्प्लॉय एज अनदर डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी. ठीक है. अब यही फॉर्मेट हम बस अब रिपीट करेंगे 4 बार. सो लेट्स पेस्ट 4 and 5 एम्प्लॉइज. अब लेट्स से आवर सेकंड एम्प्लॉइज ऑफ कोर्स 2, जिनका नाम होने वाला है ड्वाइट. ठीक है. ये भाई साहब का एज है 35 एंड ये है एक सेल्स पर्सन. ओके, सेल्स में काम करते हैं वो. नंबर 3, लेट्स से वी हैव पैम. लेट्स से पैम इज 23 एंड लेट्स से पैम इज अ रिसेप्शनिस्ट. ठीक है. वी हैव 4 में हम क्या देंगे, लेट्स से वी हैव जिम. Let's say Jim is 31 and Jim is also a salesperson. Guys, finally we have Josh, who is let's say 40. Josh is also a manager. ठीक है. Guys, हमारा डेटाबेस अभी रेडी हो गया. This is our database. ठीक है. Now we want to use that database, तो हम क्या करेंगे, we will import that, right? So from employees we will import employees का data. That's it. So here is our database. Now guys, हम एक endpoint create करेंगे अब, called as let's say app.root employees. ठीक है. Basically if anybody comes over here, they will see the info of all our employees. ठीक है. def employees and we will say pass, right? ठीक है. Okay, now what is the next step we do? इस एंड पॉइंट के लिए एक पेज बनाना होगा, तो लेट्स डू दैट. यहाँ पे आ रहे हैं employees.html. okay, and the very first thing that we will do is inherit the code. inherit हमने कर लिया. ठीक है. guys, अभी हमने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया employees, उसका एक HTML फाइल बनाया. it is inheriting from the layout file, the base file. okay, now let's invoke that. so return render template, we know that by now, it's employees.html, right? इसका टाइटल क्या होगा, employees. ठीक है. ओके, सेव कर रहे हैं. Guys, now in our home page, let's just go there. We have this employees, right? तो इवन ये भी कितना मतलब सही रहेगा ना, if we click on this, we go to the employees page. वही करते हैं अब. Now we're just going to repeat what we already saw. अब home.html में employees यहाँ पे है, एंकर टैग यूज कर रहे हैं, ओपनिंग दिस. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट विल राइट इट इनसाइड द एंकर टैग, ताकि इसमें लिंक वो आए. ठीक है. एंड व्हाट इज आवर URL? वी विल पास आवर URL लाइक दिस. एंड हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एम्प्लॉइज, राइट? सो वी विल पास दैट नेम ओवर हियर, एम्प्लॉइज. ठीक है. एंड वील ऑल्सो से दिस कि अगर क्लिक किए तो नए टैब में खोलना उसको. तो href इज़ 1 पैरामीटर, तो स्पेस छोड़ के ये वाला देंगे, सेव. ऑलराइट, इसको रिफ्रेश करते हैं. अब देखिए अगर इस एम्प्लॉइज इज ऑल्सो नाउ अ लिंक. क्लिक कर रहे हैं, न्यू टैब, वेलकम टू एम्प्लॉइज पेज, हमारा टाइटल भी आ गया. इनहेरिटेंस इज वर्किंग परफेक्टली सो फार, ग्रेट. अब what do we want to show in employees? all the employees, right? ठीक है. तो ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉय स्पेसिफिक कोड है तो हम क्या करेंगे, we will come to layout and grab this chunk of code
and we will say this because we want to access that block now to display code specific to this endpoint employees. ठीक है, ऑल राइट. अब गाइस हमारे पास एम्प्लॉयज कितने हैं? 5 है, राइट. तो इन दिस मैनुअली भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैनुअल कोड. बस 5 एक बार लिख के 5 बार कॉपी करना पड़ेगा, बट हम एक बार लिख के लूप चलाएंगे यूजिंग जिंजा. लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. तो लूप का ब्लॉक खोलना है, तो इनसाइड द ब्लॉक वी वांट अ लूप एंड दिस लूप विल बी स्पेसिफिक टू एम्प्लॉयज. तो ओपन कर रहे हैं फॉर एंड लेट्स जस्ट क्लोज इट फॉर नाउ. ऐसे लिखा हमने, न्यू लाइन में आ रहे हैं. जो भी हम ओपन करते हैं उसको एंड भी करना होता है बाय एंड फॉर. इफ खोला एंड इफ, ब्लॉक ओपन किया एंड ब्लॉक, फॉर ओपन किया एंड फॉर करके क्लोज किया. ठीक है, राइट. गाइस नाउ इनसाइड फॉर व्हाट डू वी वांट टू आइटरेट ओवर द एम्प्लॉयज डेटा. अब इस एम्प्लॉयज HTML फाइल में हाउ कैन वी एक्सेस दैट एम्प्लॉयज का डेटा? How can we access that? Okay, let's go to our application file. From employees we have imported the data. ठीक है. Now let's come to our endpoint and what have we learned? Render template में we can just pass how many of our parameters we want, right? So we will say employees equal to employees. So we are going to pass this parameter to the backend and this parameter will have this value. And what is this value? Simply our employees ka database, right? So when we do that and come here now, this parameter can now be accessed. Okay? Now we will use our learnings of Jinja and do wonderful things in this page. तो for, अब guys देखो, अब इसके ऊपर हम इटरेट करने वाले हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या है? आईडी है, डिक्शनरी है, राइट? ओके, तो वी विल से एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई डेटा इन एम्प्लॉईज डॉट आइटम्स. एम्प्लॉईज, what is this employees that we are referring to? We are referring to this parameter which has this value, the database. That much is clear. Now what will this give? Employees.items. Guys, this is basic Python code. On a dictionary, if you call this items ka method, it will return a tuple of each key and value pair. Okay, a tuple of key value pair. So we are capturing those two values, ID over here and the data का dictionary over here. ठीक है, तो basically ये कोड लिखने से employees.items, each employee ID and उनका corresponding dictionary will be packed as a tuple. So 5 entries के लिए 5 tuples. हर एक tuple में first element is ID, second element is this. ठीक है. अब यहाँ पे वी आर जस्ट अनपैकिंग दोज वैल्यूज. ऑलराइट, एज आई होप दैट मेड सेंस. इफ क्लियर नहीं हुआ बस उसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. तो जो हमारा एम्प्लॉइज का डेटा है, इट इज अ डिक्शनरी ऑफ आईडी एंड डेटा पेयर्स. नाउ सिंस वी आर लूपिंग इट, what for will return us? For emp id and data in that dictionary, right? So this emps, it will be tuple जहाँ पे id होगा, data 1 होगा, id 1 data 1, id 2 data 2 and so on. राइट तो ये जो आईडी है, राइट, ये जो आईडी है, वी आर कैप्चरिंग दैट इन दिस.
एंड ये जो डेटा का जो डिक्शनरी है ना ये वाला, वी आर कैप्चरिंग दैट हियर. ओके, दैट्स ऑल वी आर डूइंग. एज आई होप दैट मेड सेंस नाउ. ठीक है, तो हमने ये एक्सेस कर लिया. अब नो व्हाट डू वी वांट टू डू, वी वांट टू डिस्प्ले ऑल ऑफ द डेटा ऑफ ईच एम्प्लॉई. तो हर एक एम्प्लॉय के लिए ना वी विल मेक इट्स ओन कंटेनर. मतलब हर एक एम्प्लॉय को हम एक डिव के अंदर दिखाएंगे, इट्स ओन कंटेनर. ठीक है, राइट. नाउ व्हाट डू वी डू नाउ, every employee has ID, name, age, position. So we will show each of this data as a table, so it's ordered properly, right? Because अगर table दिखाना हो तो we will say this table वाला tag. ठीक है, table tag में we want to show one row, right? So TR, this is a table row. अब रो के अंदर कितने वैल्यूज दिखाने, हर एक रो में 2 वैल्यूज, द एट्रीब्यूट एंड द वैल्यू, राइट. तो फॉर ईच एट्रीब्यूट और फॉर ईच सेल वी विल से TD. ओके, अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, ID, दैट्स द फर्स्ट वैल्यू, राइट. तो वी विल से ID एंड द सेकेंड एट्रीब्यूट विल बी the ID itself. What is that ID? ये वाला. So how can I show that using Jinja? Emp ID. तो अगर एक वेरिएबल एज अ प्लेस होल्डर दिखाना है तो वी ओपन दिस कर्ली ब्रैकेट्स एंड एंटर द वेरिएबल का नाम. ठीक है, कैसे हम क्या बोल रहे हैं, हर एक एम्प्लॉई के लिए हमें उसका खुद का एक कंटेनर दे रहे हैं. Within that container we are creating a table format. अब उस टेबल में हर एक एट्रीब्यूट जो है will be one row. Each row will have 2 fields. The first field will be the heading and the second field will be the value itself, right? So now what are we going to repeat? The rows copy करेंगे and we have ID name 4 in total, right? 4 बार पेस्ट करेंगे. Now ID के बाद we had name, all right. यहाँ पे we had age and यहाँ पे we had position. Okay. Now how can we access the name? Guys, now this is that dictionary, right, of an employee. Now this emp data over here represents this wala dictionary for each employee, right? Now inside that we have to access these keys. So we will capture this. Name में आएंगे data. So within the placeholders for that dictionary we are accessing that data key, which will give us the corresponding value. And we're gonna repeat the same format over here also, right? And यहाँ पे age आएगा, यहाँ पे position आएगा. Is that what we wrote? Position, right? The whole name. Yes. Save कर रहे हैं. ठीक है? Okay, so this one div is one employee का information. अगर हमें कुछ space देना है between the employees as they are looped over, we'll give this break tag BR. This will insert one line of space basically. ठीक है? Save कर रहे हैं. Now let's run the code and then we'll talk about it. तो employees को refresh कर रहे हैं. Function object has no attribute items. Okay, let's go here. Did we refresh this? Okay, let's try to run this. Okay, function object has no attribute items. Okay, let's try to understand what this meant. Okay, for emp id data in employees dot items, ये नहीं है बोल रहा है क्या वो? Extends has attribute. Actually, let's check out these logs and see if you're able to get something. Let's scroll down.
Jinja line 83 has attribute in line 5 block content employees. Okay, let's open our application. Employees में जा रहे हैं, we are passing this employees, right? तो नाम तो सही है and we are okay guys. So actually I had written this code roughly, तो बस वो एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं. Let's just open up that thing where I wrote that. So let's open this PC. Let's go to our C drive. कोई बात नहीं यार, ये डिबगिंग हम देखेंगे अभी, ठीक है. तो सेशन 3 प्रैक्टिस में हमने यहाँ पे लिखा था, राइट. So let's try to actually not here. We need another one. We need session 3 में we need employees का HTML, right? Okay. वही तो लिखा था हमने. It's the same thing for employee ID, data and items. So I'm really not sure why it's not working. Layout.html block content के अंदर यहाँ पे दिक्कत आ रही है. So are the percentages correct? We ended the for, we are ending the block div and for emp id data in employees.items. Okay, let's remove employees and see. I mean it should not work because employees is a dictionary, right? It's a dictionary of key value pairs which we are passing, so it should have this attribute items and data age emp data and for. Let's also try to restart the server and control C देते हैं, cls python app.py. Okay, server is open. Let's open the server. We don't need this. So is everything else working? About page is working. Employees is showing that exception. Undefined error, function object has no attribute items. Function object. Guys, let's try to search about this. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, find it very strange. I just practiced this code and it worked. Find it really weird. Let's see if we made some mistake unknowingly. क्या दिखा रहे हैं लोग? As an attribute for key value and items, it should be noted I didn't change a thing. Okay, तो इन्होंने भी same किया था. So let's see the error or the correction that we have. If you have a dictionary like this, the list of tuples, okay, iterate over. Your error is a list object has no attribute. This shows that the value is a list. With the value, I hope it will be a list. Okay, so guys, ये क्या बोल रहा है? It's telling us to check the data type. Okay, so let's actually print the type of employees and let's also try to loop over here, right? So emp data in employees. Oh god, okay, it's employees data. Acha, what a blunder. all right guys, our bad, sorry, my bad. तो it is none of this. हमने यहाँ पे employees data देना था, not the module itself, right? So that was the funny thing that we did. ठीक है, and यहाँ पे भी employees, yes. And ठीक है, let's not, अब we have a module called employees, so let's not pass a parameter with the same name. So let's just call it EMPS. ठीक है,
EMPS है and this is all EMPS now, right? All right, save कर रहे हैं. Anything else? It looks good so far. Looks good for now. All right, now let's just open our app again. तो इसको close किया. Let's refresh this. They're good. About page is good. Employees page even better, right? बस ये देखना. Welcome to. अच्छा, अभी नाम नहीं दिखा रहा है. Why is the name not showing now? Employees name, age. अच्छा, data हमने दे दिया. It has to be name, right? Employees data का name होगा. Now we will quickly refresh, and here we go, guys. Right? So welcome to the employees page. And आप देख सकते हो हर एक एम्प्लॉय का डेटा कैसे मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाया जा रहा है. So this is what we meant by a table. मतलब it's organized, right? That's why we used a table for that. HTML का table. And div, and at the end of the div, you have noticed हमने ये br tag दिया था, just so that we get this spacing in the between. ठीक है? And देखना कितने सही से दिखा रहा है सब कुछ. Guys, now I want you to understand how powerful this is. अब आप employees में जाओ. Now मान लो कि Josh has left the company, right? Josh has left the company, and let's say Pam after 3 years also became a salesperson, right? Save कर रहे हैं. Basically our database got updated. ठीक है? Refresh कर रहे हैं. Guys देखना, the changes are reflecting dynamically. So we made the changes, या तो यूजर के चेंजेस थे या whatever, डेटाबेस में चेंजेस हुआ था, and dynamically our HTML code is being generated, right? Let's inspect the page source. ये देखना guys, देखो हमने div एक बार लिखा था. This is repeating for each employee with their actual values, right? देखना आप, this is what it is. ठीक है guys, and this is how you can loop using Jinja. बस देखना, अगर आपके पास हजारों एम्प्लॉयज होते भी, just with this one block of code you can beautifully display this data over here. And हमने तो बस HTML यूज किया है. If you add your CSS and JavaScript and whatnot, see how amazingly you can arrange the data, right guys? तो same way over here. ठीक है, अब इसके ऊपर just one final thing, let's add some more complexity to our code, right? Because since we are practicing here, तो ठीक है. Now let's say Josh has come back. ठीक है, सेव कर रहे हैं. Now what if we want to show the data of only the employees, I mean only the managers? ठीक है, just the managers. How can we do that? मतलब अभी हमारा ये होम पेज है ना, our home page looks like this. अब employees के अंदर let's give them one more option of managers. वो कैसे कर सकते हैं? Let's come to home.html. This is our employees का list. ठीक है, अब employees के अंदर गाइस हम एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर हम एक वैल्यू दे रहे हैं कॉल्ड मैनेजर्स. ऑलराइट, ताकि when we go to our home page now, we will see this employees के अंदर managers. So when we click here, the user should only see the managers का page, right? उसके लिए let's create one last HTML file. We'll call it managers.html. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस शुड वर्क एंड लेट्स क्रिएट द एंड पॉइंट एज वेल. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का था, इट्स गोना बी मच ऑफ द सेम. विल जस्ट कॉल इट एम्प्लॉयज़ के अंदर मैनेजर्स. ठीक है, अब मैनेजर्स है तो लेट्स कॉल दिस managers.html. title is gonna be managers, right? And the data is going to be the same.
ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर होम पेज and let's go to okay, right now our link is not clickable, let's make it clickable. तो होम मैनेजर्स है, एंकर टैग देंगे, सिंस वी वांट इट टू बी क्लिकेबल एंकर टैग के अंदर लिखेंगे मैनेजर्स, राइट. नाउ वेयर डू वी वांट टू रीडायरेक्ट आवरसेल्व्स टू दिस मैनेजर्स, क्योंकि वो फंक्शन का नाम मैनेजर्स था, राइट. And again we want it in a new tab, we'll call it, ये पैरामीटर भी उसको पास करेंगे. सेव कर रहे हैं, रिफ्रेश, ये देखना मैनेजर्स, न्यू पेज. ये देखो गाइस, क्लिक करने से अपने आप इट केम अप विद दिस एंड पॉइंट. ठीक है, वेलकम टू मैनेजर्स पेज एंड टाइटल भी आ गया. ग्रेट. Now let's just show that data now. अब हम क्या करेंगे, अगेन एज लेआउट में जाएंगे. लेट्स क्विकली ग्रैब दिस मैनेजर्स. यस गाइस, यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्रॉम ऑल ऑफ द एम्प्लॉइज वी वांट टू फिल्टर दोज पीपल हु आर मैनेजर्स. तो मतलब फॉर लूप के अंदर एक इफ चलाएंगे, अगर मैनेजर है तो डेटा दिखाएंगे. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. सो हाउ कैन वी डू दैट नाउ. तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा कोड था वही कॉपी करेंगे हम. इफ फॉर, हाँ, टिल द फॉर लूप, राइट. तो मैनेजर्स पे आते हैं, लेट्स डू दैट. बट while we are looping we have to make one check. उसके लिए we need an if. so if यहाँ पे दिया, and before we forget to close it let's also give it here if. ठीक है, and ये जो भी कोड है हम उसको अंदर नेस्ट कर देंगे because it is inside the if block now, right. तो इसको रीडेबिलिटी के लिए ऐसे उसको नेस्ट कर देंगे. ऑल राइट. अब गाइस हमारा कंडीशन क्या था, इफ emp डेटा ऑफ पोजीशन इक्वल टू मैनेजर. लेकिन हमने डेटाबेस में हमें कैपिटल लिखा था m. देखो द थिंग इज वी डोंट नो व्हाट द यूजर माइट टाइप, राइट. दे माइट टाइप कैपिटल में, कैप्स एंड लोअर केस में, वो कुछ भी एंटर कर सकते हैं. So we cannot trust the user's input to be consistent. So we will make it consistent using our coding skills, right? तो हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी से जो भी उन्होंने वैल्यू दिया होगा we will convert it to all lower case dot lower. ठीक है, इतना करने से now we can directly compare to our value. Okay? हम क्या बोल रहे हैं, after iterating over all of these databases, these values, ये चेक करना कि उनका पोजीशन अगर मैनेजर है. इफ यस देन वी विल डिस्प्ले ऑल ऑफ दिस, अगर नहीं है जस्ट इग्नोर एंड गो टू द नेक्स्ट इटरेशन. दैट्स इट, राइट. सेव कर रहे हैं, होम पेज, लेट्स क्लिक ऑन एम्प्लॉइज. वी हैव ऑल ऑफ आवर एम्प्लॉइज, राइट. ओके, नाउ लेट्स गो टू मैनेजर्स. Okay, we have another error. Expected an expression got end of statement block. Syntax error है. Okay. So something with if. Oh yes, we have to do end if, right? Yes. End if कर रहे हैं. Let's close it all. Refresh. Employees is working. Managers is also working beautifully, guys. ठीक है. So we had two managers in our database, Michael and Josh, right. So guys, that was it. ठीक है, so we wrote all of this stuff. Let's just quickly recap हमने क्या क्या किया exactly यहाँ पे आज के क्लास में. Because we started off with simple HTML templates. ठीक है, हमने home and about का एक simple HTML का template बनाया था.
stating this is home page, this is about page, right? उसके बाद we firstly spoke about जिंजा के प्लेस होल्डर्स, राइट? हमने देखा था कि ओपन ब्रैकेट्स के यूज करके आप प्लेस होल्डर्स डाल सकते हो. आफ्टर दैट व्हाट डिड वी डू? वी डिड इनहेरिटेंस, राइट? तो जो भी कॉमन कोड था हमने उसको यहाँ पे डाला लेआउट और HTML में, राइट? सो दिस टाइटल विल हैव वन पैरामीटर एंड यहाँ पे एक कॉमन पैरामीटर वैल्यू इनपुट करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे. देन वी यूज दिस ब्लॉक स्टेटिंग दैट हर एक पेज के लिए अगर उसका डेडिकेटेड कोड कुछ होगा तो इसके अंदर डालना, राइट? इतना स्ट्रक्चर हमने बना दिया, द ब्लूप्रिंट फॉर एवरी पेज ऑफ दिस वेबसाइट. ऑल राइट, बिल्डिंग ऑन दैट home.html में हमने क्या किया? वी एक्सेस्ड दैट ब्लॉक कंटेंट, राइट? उसके अंदर हमने ये कोड लिखा था, कंटेंट्स का पेज हमने कुछ दिखाया, वी शोड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, राइट? एंड थोड़े वैल्यूज में हमने एंकर टैग यूज किया टू रीडायरेक्ट द पेज. एंड HTML के थ्रू इफ यू वांट टू लाइक redirect anything, you will use this A tag, anchor tag, and for the bullet points UL, unordered list. ठीक है, इतना क्या हमने. and for the redirection we have to say what is the URL, right? so we know the URL, we know the functions of the URLs, तो हमने बस Flask का ये function यूज किया URL for, and we mentioned the name of each and every function. that's it. ठीक है, एंड ये हमने किया. अबाउट पेज में क्या किया हमने? उसका एक कंटेंट दिया हमने. इनसाइड द ब्लॉक वी हैड दिस div, राइट? उसके बाद वी सॉ हाउ टू यूज इफ एल्स फंक्शनैलिटी, राइट? वी हैड दिस वन, इवैल्यूएट, बिकॉज ये एक प्लेस होल्डर होता है. एंड टू यूज इफ यू यूज द सेम फॉर्मेट, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, परसेंटेज, उसके अंदर इफ या ब्लॉक या फॉर द सेम वे उसको यहाँ पे क्लोज भी करना होता है. ठीक है, एंड इनसाइड द इफ इट इज जस्ट पाइथन कोड गाइस, दैट्स इट. यू आर जस्ट राइटिंग पाइथन कोड. इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन, एल्स, राइट? एंड अगर कुछ है जो भी वी जस्ट शोइंग अ पैराग्राफ टैग विद द रिजल्ट, राइट? देन व्हाट डिड वी डू? वी सॉ फॉर लूप. उसके लिए वी मेड दिस डमी डेटाबेस which is a nested dictionary, and then we created the respective endpoints, employees के लिए, managers, evaluate के लिए, and inside employees we wrote this code. ब्लॉक के अंदर हमने इसके ऊपर आइटरेट किया था. ठीक है, फिर accessing the dictionary and यहाँ पे टेबल जैसा दिखा रहे हैं so that it looks organized. ठीक है, टेबल, inside table each row, inside the row two cells, ID value, name का value. ठीक है, iterate कर रहे हैं. same thing for managers, the same loop but we are just calling this filter. if the position is manager then we will show all of this. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने सही से उसको एक contents पेज में दिखाया and that's it guys. and जो भी बाकी पैरामीटर्स थे रेंडर टेम्पलेट के अंदर हमने बस उनको पास किया था. एंड इन द बैक एंड वी विल बी एबल टू यूज ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स ओवर हियर, राइट? दैट्स इट. बिकॉज यस ऑब्वियसली एज वी वर कोडिंग आपने थोड़े यू सॉ फ्यू एरर्स ऑल्सो, राइट? सो वी मेड अ फ्यू मिस्टेक्स. कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी सॉ हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट? सो लाइक व्हाट डू वी डू? सर्च इट ऑन द वेब, सर्च योर रफ वर्क and somehow it will click what went wrong करके, है ना? so we made one blunder. बस मॉड्यूल का नाम हमने पास कर दिया था. we rectified the errors and the final output is our simple web page guys. without any styling we were able to make a pretty good application, right? about पेज में जा रहे हैं, about का info दिख रहा है, employees, सारे employees का डेटा दिख रहा है, managers पे जा रहे हैं, all of this is showing up, right? so guys that was it. I hope all of this made sense. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखे थे आज, but I hope आपको मज़ा आया होगा, right? तो we saw some new way of coding and all.
Guys, that's it. Practice करना, साइड बाय साइड अभी कोड करना, एंड फीडबैक फॉर्म शेयर करना गाइज. लेट मी नो योर फीडबैक, हाउ यू फाइंड दिस सेशन. एंड अगर मतलब कहीं पे दिक्कत आ रही है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, reach me out on LinkedIn and we can connect and talk about it. Okay, guys, that's it from my end. Thank you so much. And the code and all, as always, will be shared on your GitHub. No worries, right? Take care. Thank you. We'll see you in the next class. Yeah. Bye bye.